Good morning to you all. Good morning, sir. Yes. Good morning, sir. So let us continue the questions which we are going through in the last class. Okay, let me share the PPT. Okay. So is the question visible? The PPT is visible? Yes, sir. Yes. Okay. सर आप स्क्रीन पे जब लिखते हैं ना तो थोड़ा लिखने के बाद थोड़ा देर रुकिएगा ना, स्क्रीनशॉट लेने दीजिएगा, उसके बाद उसको डिलीट कीजिएगा. Okay. Okay. यस सर. So yesterday we have seen this question. Okay, so let us go to the next question. Yes. The image channel selectivity of a super heterodyne communication receiver is determined by, okay, antenna and pre-selector, the pre-selector and RF amplifier, the pre-selector and IF amplifier, the RF and IF amplifier. Okay, so this is 1995 question of 1 mark. So I think we have discussed the block diagram yesterday for super heterodyne receiver. So in that block diagram, what we have discussed yesterday also, that image channel selectivity of a super heterodyne receiver communication receiver is determined by, Sir, RF and IF amplifier. देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम था, उस ब्लॉक डायग्राम में मैंने कल यहाँ पर ड्रॉ किया था दैट देयर इज अ प्री सेलेक्टर. ओके, प्री सेलेक्टर, और इसके बाद हमने क्या रखा था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रहता है, देयर इज RF stage. yes, there is a RF stage, and after this RF stage there is a mixer. Okay, and after mixer, what is there? There is IF amplifier. IF stage. IF stage. Okay, IF amplifier. And mixer, what it is doing, this is mixing the incoming signal, the whatever signal incoming signal is coming, and the local oscillator signal. We have seen this yesterday. So this local oscillator is tuned based upon whatever the signal is coming here, and after mixer, the signal what we are getting is IF, the image frequency. The sorry, it's not image frequency. The intermediate frequency Fi is equal to 455 kilohertz. Okay, so IF amplifier में अगर ये image पहुंच गया, हमने image भी देखा था, image क्या है, so always FL, we have seen that FL should be greater than whatever the incoming signal. what मान लें यहाँ पर एक incoming signal FC आ रहा है, या FS इसको मान लें, incoming signal FS. So the frequency of local oscillator frequency should be greater than the incoming signal frequency by the intermediate frequency, which is 455 kilohertz. So what, yes, so here Fi जो image frequency, sorry, जो intermediate frequency हमें मिल रहा है, that is Fs minus of FL minus of Fs. This is the image frequency, sorry, intermediate frequency, FIF. Okay, IF लिख देते हैं, FIF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. इसके अलावा एक और सिग्नल अगर आ जाए यहाँ पर मिक्सर स्टेज से क्रॉस कर जाए, देन वी विल हैव अनदर कंपोनेंट ऑफ FL प्लस ऑफ FS. ओके, ये एक सिग्नल आ जाए, देन दिस इज नथिंग बट द इमेज सिग्नल. सो अगर ये इमेज सिग्नल IF एम्पलीफायर तक पहुंच गया, तो इसके बाद के जो स्टेजेस हैं वहां पर इमेज को हटाना
इम्पॉसिबल है. ओके, इसके बाद क्या रहता है? IF एम्पलीफायर के बाद देयर इज डीमॉड्यूलेटर. सो इमेज फ्रीक्वेंसी जो है इस IF एम्पलीफायर के पहले ही क्या होना चाहिए? डिटेक्ट हो जाना चाहिए. अगर ये इमेज पहले डिटेक्ट या उससे रिजेक्ट नहीं किया गया, then it will introduced in the IF amplifier and it will also get amplified. So जो भी इमेज है वो प्री सेलेक्टर और ये जो RF स्टेज है यहीं पर हट जाना चाहिए. ये जो स्टेज दिख रहा है IF स्टेज एंड प्री सेलेक्टर यहीं पर हट जाना चाहिए. अदरवाइज it will get into the IF amplifier. So the best option is the pre-selector and RF amplifier. ओके, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है. एक बार नहीं, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन. द इमेज और सेकंड चैनल सेलेक्टिविटी ऑफ सुपर हेटेरोन कम्युनिकेशन रिसीवर इज डिटरमिन्ड बाय द प्री सेलेक्टर एंड RF एम्पलीफायर. ओके, सो इमेज यहीं पर रिजेक्ट होना चाहिए. इमेज रिजेक्टेड. इसके बाद आगे मतलब इमेज अगर आगे चला गया तो फिर उसे हटाना मुश्किल है. ओके, सो इट शुड बी डिटेक्टेड और it could be rejected at this stage only. Can I move to the second question? Next question. Yes, sir. Okay, so I am going to delete this text, whatever I've written. Otherwise it will appear into the next question. Yes, sir. See, here it is. So I have to clear all the points. Yes, PLL can be used to demodulate. Okay, so we have actually not done this part, the demodulation of FM signal, and this is used for FM demodulation. PLL can be used to demodulate. This PLL stands for phase log. Okay, this PLL stands for phase log loop, and this is used to demodulate FM signals. I think we have seen the SBSC, and there we have not seen this. We have seen PAM, but we have not seen this PCM also. Okay, so अगर समय मिला तो हम लोग बाद में देखेंगे, नहीं तो आपके पास जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जब डिजिटल कम्युनिकेशन का आगे का पोर्शन पढ़ोगे, in that case we will see PCM signals. You can see PCM signals. So this PLL demodulation technique is used in FM signals. It is also one more question based on memory only. Okay, let us move to the next question. Yes, here it is. Again, you can see here, the image channel rejection in a super heterodyne receiver comes from, again in 1996. Previously, we have seen the same question in 1995, 1 mark question. In 1996, again, there is a question. Language has been somewhat changed, but the same thing is also here. So what should be the answer? What should be the answer? सर सी होगा. Yes, C. Yes, it should be C. क्योंकि IF स्टेज में पहुंचना नहीं चाहिए. IF स्टेज तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इमेज सिग्नल IF स्टेज तक पहुंचना ही नहीं चाहिए, उसके पहले ही डिटेक्ट हो जाना चाहिए. सो इट शुड बी डिटेक्टेड ओनली एट द डिटेक्टर एंड द RF स्टेजेस ओनली. IF स्टेज नहीं होगा. IF स्टेज स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज. सो ये नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है. RF स्टेज ओनली एक ऑप्शन है, और एक ऑप्शन है डिटेक्टर एंड RF स्टेजेस ओनली. ओके, लास्ट वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि IF स्टेज यहाँ पर इंक्लूडेड है, और प्री सेलेक्टर और डिटेक्टर कह लें तो वहाँ पर. सो दिस शुड बी द बेस्ट चॉइस. ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, an FM signal with a modulation index 9 is applied to a frequency tripler. The modulation index in the output signal will be. Okay, so
in FM signal, in case of narrowband FM and wideband FM, we have seen that for generating narrowband FM, wideband FM was used, and in that case, some multiplier or square law devices are used. In that case, all of the things are get multiplied except the FM, that is the modulating frequency जो है, it is unchanged. It remains unchanged, but the other things, that is the delta F means the deviation as well as the modulation index MF, yes, as well as और इसके अलावा क्या हमारे पास parameters हैं, del F, MF. Okay, so these are got changed. So based upon this value, the modulation index in the output will be, तो पहले क्या दिया गया था, FM signal with a modulation index of 9. So when the modulation index is 9 and frequency tripler is used, in that case, what will happen? In that case, what should be the answer? सर 3 होगा आंसर. What is mean by frequency? What is mean by tripler? What is meant by tripler? ट्रिपलर का क्या मतलब होता है? So 3 times. ट्रिपलर का मतलब होता है सर 3 टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी. सर 3 टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी. Yes, it is written here frequency tripler. Okay, तो मैंने अभी क्या कहा कि FM will remains unchanged and del F and MF will change based upon the multiplier. So यहाँ पे multiplier जो यूज हो रहा है वो 3 times multiplier यूज हो रहा है. So del F भी 3 times हो जाएगा और MF भी 3 times हो जाएगा. तो जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका 3 times हो जाएगा. Yes, तो it should be 27. क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं कि MF क्या होता है, इट इज del F by FM, एंड अगर del F 3 times हो रहा है तो MF also will become 3 times. ओके, तो एक इक्वेशन हमने देखा था, तो आई थिंक आई शुड राइट दैट इक्वेशन. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में जो हमने इक्वेशन देखा है, उस केस में हमारे पास AC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस KF ऑफ Integration of है. सो जब नैरो बैंड FM के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, सो दिस वाज the very basic equation for FM signal. Okay, but when we write the equation for frequency modulation in terms of narrow band FM, the equation was what? S of FT, the frequency modulation, is equal to A cos of omega CT plus, in terms of modulation index जो हम देखते हैं, we will have plus MF of sin omega MT. So in terms of modulation index we have this term. तो यहाँ पर जब FT का वैल्यू हम cos omega MT लेते हैं, in that case we will have sin omega MT and we have the MF value. So जब हम in case of wide band modulation, जब हम के through narrow band FM का generation करते हैं, in that case the frequency multipliers are used, and in that case this MF will become that multiplication factor. जो भी यहाँ multiplication factor है, that will become that multiple times. Okay, so should I go to the next question? yes sir. Okay. Again, the image channel selectivity of super heterodyne receiver depends upon Sir, breach selector and RF amplifier only. So
प्री सेलेक्टर एंड RF एम्पलीफायर ओनली। तो हम देख ले यहाँ पर IF एम्पलीफायर ये तो नहीं हो सकता है, RF एंड IF एम्पलीफायर नहीं हो सकता है, प्री सेलेक्टर RF एंड IF एम्पलीफायर नहीं हो सकता है। सो प्री सेलेक्टर एंड RF एम्पलीफायर्स ओनली। तो IF एम्पलीफायर तो किसी भी हालत में नहीं होगा, जिस भी ऑप्शन में IF एम्पलीफायर होगा दैट विल गेट रिजेक्टेड, एंड इन ऑल द अबव 3 options we have IF amplifier in as one of the conditions, so this should not be the answer, so it is the best choice. So you can see that in 1998 again this question has been asked, so in 1995, in 1996 and in 1998 again. Okay, let us go to the next question. Yes, so there is a DSBC signal is generated using the carrier cos omega ct plus theta and modulating signal xt. The envelope of DSBC signal is okay. Can anybody tell me? So in case of DSBC signal, what we get? We get the signal in terms of USB and LSB. yes, in USB and LSB. So in that case, we are getting both the sidebands except the carrier, because it is DSBSC, double sideband suppressed carrier. So you have to remember that we will always get the mod of xt. The mod of xt means what? That we will get RMS values. yes, what we want to generate, we have to generate the modulating signal at the receiver again. So when generated using the carrier this, the modulating signal xt, the envelope of DSBSC signal will always be the mod of xt. Okay, so you have to remember this. We will always get this much of signal which we want to generate, or which we want to transmit. Okay. Okay, let us go to the next question. Yes, sir. Okay, a modulated signal is given by, so modulated signal is given st is equal to m1t cos 2 pi fct plus m2t sin 2 pi fct, where the baseband signal m1t and m2t have bandwidths of 10 kilohertz and 15 kilohertz respectively. The bandwidth of modulated signal in kilohertz is, so can anybody tell me the answer? As this is the modulated signal and M1T and M2T are two baseband signals with the bandwidth of 10 kilohertz and 15 kilohertz. So what would be the bandwidth of modulated signal? So in this case, what we are observing that the carrier frequency is same. So इससे हम यहाँ पर कोई मतलब नहीं है. Actually हमें देखना है कि हमारे पास दो सिग्नल्स है M1T और M2T. So bandwidth डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. ओके, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है? वो 15 किलोहर्ट्ज है. So we have seen that the bandwidth is nothing but the twice of maximum frequency of the modulating signal. Twice of the maximum frequency available in the modulating signal. So agar wo multi, so it is if the modulating signal is the multi-tone signal, for that whatever the maximum frequency available in the modulating signal, that will give the bandwidth of the modulated signal. Okay, is it clear? क्या कहा मैंने? जैसे यहाँ पर जो सिग्नल है, यहाँ पर मल्टी टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है. सो जो भी जिस भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जिस भी कंपोनेंट का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, दैट विल बी गिवन एज द maximum frequency of the signal, and based upon that
the bandwidth will be twice of FM. So 2 into 15 should be the answer. So 15 is kilohertz, so it should be kilohertz. Okay. Okay, let us go to the next question. Okay, so let me write the question, the next question. So one thing I want to tell you all that I am also taking the class of digital electronics, and there also I am discussing the gate questions. So if anyone want to join that class, then you are most welcome, and you can join that class of digital electronics where I am discussing the gate questions of digital electronics. Okay. Yes. If So any, what's the time of? so it is on Saturday. It is on Saturday and starts from 10:40 a.m. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. You will send the link for that. Yes, I will share the link in the class on Saturday or Friday. Okay. So Okay. share the link in your group also. So whoever want to join can join the class. Okay. So the question is, a modulated signal. There is a modulated signal. Okay. And it is given by ST is equal to am I audible? Yes. Yes. Sir. Okay. Just wait for a few seconds. Are you able to see the white page? Yes, sir. Yes. Okay. Okay, so the question is,
Yes, the modulated signal is given by ST is equal to e to the power minus AT cos of omega CT, omega C plus omega C plus del omega T ut. Okay, so the signal is the modulated signal is given as ST is equal to e to the power minus AT cos of omega C plus del omega, omega C plus del omega T ut. So I think all of you know what this ut is. Sir, unit, step unit. Yes, Step unit function. ut is Sir, UT denote step unit function. unit step function. And what is the definition of this? Where it exists? If we are writing ut, then where it exists? Yes, can you Amplitude one. सर डीसी फंक्शन पे एग्जिस्ट करता है ये ut is equal to 1 for what? Yes, sir. For t is greater than 0 T is greater than 0. greater than equal to 0 and is equal to 0 for t is less than 0. otherwise. Okay, is it correct? Yes sir. Okay, so जो हमें दिया गया है वो एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है. ओके, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू फाइंड, यहाँ पर जो ये ए है ओमेगा सी एंड डेल ओमेगा. ओके, सो दीज ऑल आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स एंड यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है व्हाट, दैट ओमेगा सी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डेल ओमेगा. ओके, so what we have to find out here, the complex envelope of ST, the complex envelope of XT, XT not, this is here, ST is given, so the complex envelope of ST is given by, okay, so ये पूछा गया है, the modulated signal ST is given and you have to find out the complex envelope of ST. Okay, so the complex envelope of ST is given by, okay, अगर हमारे पास कोई एक बैंड पास सिग्नल है then it can be represented with, okay, so let me change the color. Okay, so any band pass signal can be represented in the form ST is equal to S of I cos of omega CT minus S of Q sine of omega CT. Okay, so what is this? Where what this SI and SQ? Okay, so SI is what? It is the in phase, it is the in phase part and it is the quadrature part.
in phase component, and it is the quadrature component. ओके, क्वाड्रेचर कंपोनेंट बोल लें या इसे हम और एक नाम क्या देते हैं, आउट ऑफ फेज कंपोनेंट. ठीक है. सो नाउ अब हमारे पास जो एस टी दिया हुआ है वो, सो यहाँ पर हम इसे मान लें S1T. ओके, क्योंकि दोनों को एक दो नोटेशन नहीं दे रहे हैं, ST and S1T. So now S1T can be represented in terms of, as it is given, e to the power minus 80. Okay, it is given here, e to the power minus 80 cos of omega c plus del omega t ut. Okay, so here we have a form that's cos a plus b. Okay, so here we have a form cos a plus b, so it can be written as e to the power minus 80 cos of cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. So cos a cos b minus sin a sin b. Okay, and we have a ut. सो यहाँ पर इसके पहले आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज यहाँ बता देना चाहता हूँ. अब ये जो बैंड पास सिग्नल है, इस बैंड पास सिग्नल को हम यहाँ जो मैंने नेगेटिव साइन दिया है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन भी हो सकता है बेस्ड अपॉन द सिग्नल. ओके, based upon the signal it may be positive or negative. So let us move further. So now this e to the power minus 80 cos omega ct cos del omega t. Now this by comparing this equation with this equation, what we will have, as this is also a band pass signal, so after comparing, what we will have, so comparing this 1 and 2. Okay, S of it is what, S of it in phase part. हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी आप क्या देख पा रहे हो, cos ओमेगा ct वाला पार्ट यहाँ है अलग, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, cos del ओमेगा. तो जो इवन जो S of it का वैल्यू हम लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, e to the power minus 80 cos of del ओमेगा t ut, क्योंकि यहाँ पर एक ut वाला पार्ट भी आ रहा है. हाँ, एंड sqt का वैल्यू क्या होगा, क्वाड्रेचर कंपोनेंट का वैल्यू अगर देखें बाय आफ्टर कंपैरिजन, देन वी विल हैव माइनस ऑफ 80 साइन ऑफ del omega t. ut. Okay, so these are the parts we have. Now the complex envelope. So if this is the case, then the complex envelope is given by S complex envelope T is given by S of it plus J S of qt. Okay, so when we will put these values, whatever the values we have, e to the power minus 80 cos del omega ut, and इन दोनों values को जब हम यहाँ put करेंगे, then we will have what, e to the power minus 80 is common, as you can see here, e to the power minus 80 is common from both the terms, and under the bracket we will have cos of del omega t plus j sin of del omega t and ut. Okay, now
how this can be written? E to the power minus at and cos theta plus j sin theta. So this is in the form of cos theta plus j sin theta. So it can be represented as e to the power j del omega ut. Okay, so the complex envelope can be represented or can be given by this part. Okay, so in the question, what we have to find? We have to find the complex envelope of ST. Okay, so we have the 4 options, and within the 4 options, we have this answer. So in that options, the answer may be in the form of this value also. Okay, so this is a good question, and this is in the form of expression. So instead of this expression, this question can be asked with some numerical values also. Okay, so this is a good question. Hello, sir. Yes. Hello. Sir, you have told us that the positive and negative sign is depend on the signal. Then how we can clarify that we will put negative or positive? Just a minute. ओके, सो यहाँ पर हमने क्या देखा है? S ऑफ, ओके, लेट मी टेक द एनोटेशन. ओके, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं S ऑफ IT, S ऑफ IT जो हमने यहाँ पे लिखा है, S ऑफ IT इज इक्वल टू माइनस AT cos ऑफ डेल ओमेगा t ut and this, and the complex envelope, the value of complex envelope will be based upon, so यहाँ पर हमने क्या लिखा है? पॉजिटिव साइन. So this may be negative and positive based upon the value here. Yes, ये जो S1T है, ये जो बैंड पास सिग्नल है, बैंड पास सिग्नल को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स इनवेलप का वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव या निगेटिव होगा बेस्ड अपॉन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो अगर ये पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव है, देन देयर वी विल हैव अ पॉजिटिव साइन हियर, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव होगा तब यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा. सो बेस्ड अपॉन दी बैंड पास सिग्नल we have the complex envelope. Okay, But say it question it is mentioned that it is a positive. in question it is mentioned That is given here that cos omega c plus del omega. Here plus sign is available, sir. yes, here plus sign is given. So in this case we have got here that यहाँ पर हम जो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इस बैंड पास सिग्नल के रेस्पेक्ट में ये बैंड पास सिग्नल क्या है. ओके, बैंड पास सिग्नल जो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, एस ऑफ आई टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी माइनस ऑफ एस क्यू साइन ऑफ ओमेगा सी टी, इसके बारे में. ओके, ये तो एक अलग वैल्यू एस टी का दिया हुआ ही है, यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस ए टी कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस